सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बिल्ड करने वाले पीसी विद इन अ बजट ऑफ 80,000 रुपीज में ही रह के मैं ट्राई करूंगा एक पीसी बिल्ड करने का। उससे 1-2,000 अपवर्ड जा सकता है ये बिल्ड, बट दिस विल बी अ बीस्ट इन दिस बजट। ओके, राइट नाउ वी आर एडिंग Ryzen 5 3400G Vega CPU है ये, ठीक है। तो इसमें आपको पहले से कि नॉन RGB फैन दिख जाएगा सीपीयू कूलिंग के लिए। यह आपका बस आपको दो तीन चीज और ऐड करना पड़ेंगे। तो इस बिल्ड में हम लोग के पास एक गेमिंग माउस पैड, गेमिंग कीबोर्ड, गेमिंग माउस एंड मॉनिटर विथ 144 हर्ट्ज के साथ मिलेगा। 24 इंच का LG का रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं Ryzen 5 3400G Vega। ये पर्सनली मैं भी यूज़ कर रहा हूँ अभी इससे ही। तो ये बीस्ट है मेरे हिसाब से। आपको आराम से ग्राफिक्स कार्ड जो मैं ले रहा हूँ उसके साथ आराम से आपको, हाई तो नहीं बोलूँगा, मीडियम सेटिंग्स में आपको बहुत अच्छा FPS निकाल के दे देगा, जैसे आपका हो गया GTA 5 में। और अगर आप वैलोरेंट खेलते हो ऑनलाइन गेम, तो आपको एक नेटवर्क चाहिए होगा ऑन नहीं, तब भी उस गेम में मेरे हिसाब से ही आपको ग्राफिक्स के कार्ड के साथ 300 FPS आराम से निकाल के दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, लेट मी शो यू द एक्सेसरीज। इसमें जो गेमिंग हेडफोन्स मैंने लिए हैं वो है एक्सा 3E900 वायर्ड स्टीरियो गेमिंग हेडसेट्स ओवर ईयर हेडफोन्स विद नॉइस कैंसलेशन माइक। जो इसमें माइक का क्वालिटी है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा देने का ये लोग वादा कर रहे हैं, बिकॉज ये बोल रहे हैं नॉइस कैंसलेशन मीन्स आपका बैकग्राउंड नॉइस ये नहीं लेगा, बस आपको इस पे ही फोकस करेगा, ठीक है। और जो माइक है वो डिटैचेबल भी है। कंप्यूटर, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac, laptop, you can use this headphone with everything. You are getting right now there, you are getting an extender right over there also। ओके, माइक ऑन ऑफ का एक स्विच मिल जाएगा आपको, प्लस इसमें कोई RGB का इफेक्ट नहीं है। बट देन ऑल्सो एवरीवन इज सेइंग मींस माय फ्रेंड हैव गॉटन दिस ऑन हिज बर्थडे, एज he has on self purchased it and he have given me a review that this headphone is beast। Okay, now we are adding, we have in a budget, so right now we are adding a gaming keyboard and mouse in this. So we are adding this and esports KM 50000 watt gaming backlit कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो, ठीक है। तो ये गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस का वादा कर रहे हैं। बैकलाइट मिल रहा है भाई 1299 के बजट में, आपको क्या मिलेगा इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक हैंड रेस्ट का भी जगह दिया है वर्ल्ड। ये स्पेशल एडिशन तो नहीं है, बट देन आल्सो यू आर गेटिंग बैकलाइट, देन इट्स ओके टू पे फॉर इट। इट्स रियली ओके टू पे फॉर दिस वन। ओके, 1299 में आपको इससे अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। और जो माउस की क्वालिटी है मुझे उतना ठीक तो नहीं लग रहा, बट देन ऑल्सो इट विल वर्क फॉर यू। वर्थ इट है भाई। 1299 रुपीज में आप क्या एक्सपेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है जो हम लोग का 20 मीन्स द गेमिंग मॉनिटर। ओके, वी आर टेकिंग LG Ultra Gear 24 inch 60.96 centimeter 144 hertz native 1 milliseconds। ओके, ओ माय गॉड, 1 milliseconds का रिस्पॉन्स रेट है, दैट्स रियली ओपी। Okay, full HD gaming monitor with Radeon FreeSense TN panel with display port, HDMI height adjust stand। Okay, अब यहाँ पे जो आप देख सकते हो, ठीक है, दिस साइड मीन्स द LG लिख के नीचे में जो है आपको, ठीक है, वहां पे आप उसको थोड़ा अप भी कर सकते हो, डाउन भी कर सकते हो। दैट्स रियली नाइस, आई थिंक सो इट इज नाइस। ओके, ये आपके लिए वर्थ इट है भाई। 13,000 में आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। HDMI पोर्ट, सॉरी, 12,999। Okay, that's nice। Okay, I will pay for it। If I was building my PC, no, that would have taken this। Now this is my personal favorite because I am using it also, so I will prefer you to get this also। I was having one anti-sports. First of all, when I have purchased this PC, I wasn't having a gaming PC, means a gaming cabinet. Sorry, PC was of gaming, but the cabinet was not of gaming. Okay, so I purchased this. This is of Chiptronics, not it is of Anthrosport. It's of Chiptronics GX 3000 RGB mid tower ATX। Okay, ATX is there, so और आपको इसके साथ एक नॉन RGB फैन भी मिला। Then so we have going to add a fan too, but अगर आप okay, 1 into 120
रियर फैन, ओके। सामने आपको 3 RGB फैन देंगे ये, ठीक है। सामने के 3 RGB फैन है, तो आपको फैन ऐड करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन देखते हैं, अगर आपकी मर्जी है तो आप ऐड कर सकते हो, वैसे मैं ऐड नहीं करने वाला इस बार, ठीक है। तो ये वाला गेमिंग कैबिनेट आई वी आर एडिंग, ओके। नाउ इट इज द टाइम फॉर द मेन, मींस द ग्राफिक्स कार्ड, ओके। So right now we are adding the graphics card Galax GeForce GTX 1650 EX1 Click OC 4GB GDDR6 graphics card 12,999. This graphics card will give you an means high resolution games. I think so it will give 120 FPS normally, ये निकाल देगा आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग के पास है, जो मैं फैंस बोल रहा था, फैंस वी आर गोइंग टू ऐड, अगर आप ऐड करोगे, मैं नहीं सोच रहा बिकॉज उसका रियर में अगर 3 फैन है, अगर आपके पास ज़्यादा बजट है देन यू कैन ऐड दिस फैन ऑफ 780 रुपीज फॉर अ सिंगल पीस। आई एम यूजिंग दिस fans. I have purchased it a bundle of 2050 rupees and I have got it 4 of them, okay। 2050 रुपीज में हम 4 मिल जा रहा है। आप इसको ले सकते हो, नहीं तो 2200 में आपको यहाँ पे 3 दे रहा है, और एक कलर चेंजिंग किट भी दे रहा है। सो यू कैन परचेज दिस वन ऑल्सो, बट आई विल प्रेफर दिस वन। सिंगल सिंगल आप 3 को खरीद लो, आराम से आपका काम हो जाएगा। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट देन ऑल्सो this is the Ryzen 5 3400G Vega graph CPU, okay। this CPU personally मैं अभी तो नहीं यूज कर रहा, बट मैं पहले यूज कर रहा था इसको। right now I am having Ryzen 7 2700, sorry, Ryzen 7, I forgot the model, Ryzen 7 I am using right now, but I will prefer you because I have used this CPU, this is a beast, I can से दैट आप एडिट आराम से स्मूथली कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। 14,880 रुपीज इज वर्थ इट फॉर दिस राइजन का चिपसेट। नाउ जहाँ पे हमारे सीपीयू प्रधारेंगे मींस उसका कुशन बहुत अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। सो वी आर एडिंग गीगाबाइट AMD B450 S2H अल्ट्रा ड्यूरेबल मदरबोर्ड विथ Realtek GBE LAN with CFOS Speed PCIe Gen 3 into 4 M.2। M.2 का भी आपको स्लॉट दे रहा है, ये M.2 का स्लॉट दे रहा है भाई। आप फ्यूचर में अगर अपग्रेड करोगे ये आपके लिए बीस्ट होगा, ओके। वेट अ सेकंड, मैं आपको फिर से बताता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा बजट है देन आई विल प्रेफर द दो दो 2,500 आप ज्यादा लगाओ, और इसमें RGB आपको एक दिखाता हूँ मैं। ये देखो RGB में जो बोल रहा था, ये देखो 8,790 रुपीज में आपको RGB मिल जाएगा। दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली अनएक्सपेक्टेबल दैट 790 रुपीज में आपको ये मिल जाएगा। यू कैन टेक गो फॉर इट ऑल्सो, इट इज अ नाइस, दे ऑल आर सेम, बट RGB इसमें उसलिए डिफरेंट है थोड़ा, okay। Now we were in the motherboard finish, tick mark। now मैं फ्यूचर भी थोड़ा देख रहा हूँ, मीन्स आप अगर आगे जाके आपके पास बजट आता है, आप उसका अपग्रेड करते हो, मैं उसको देख के चल रहा हूँ, ठीक है। तो राइट नाउ वी आर यूजिंग द पावर सप्लाई Corsair CV650 watt series 80 plus bronze certified 615 watt non modular power supply। इट्स नॉन मॉड्यूलर, तो थोड़ा अपसेट हो सकते हो आप, बट नॉट अ बिग डील भाई। आपको 5,297 रुपीज में इससे बढ़िया कुछ नहीं मिलेगा, मेरे हिसाब से तो नहीं मिलने वाला भाई, बट दिस इज द बेस्ट। आई थिंक सो दिस इज द बेस्ट इन दिस बजट, यू कैन बिल्ड इट, यू कैन गो फॉर इट भाई, दिस इज वर्थ इट, आई थिंक दिस इज वर्थ इट, ओके। 650 watt, because देखो अभी तुमको उतना जरूरी नहीं है, but when you will be having a budget and you will be adding a RTX card means 2070 or 3090 type of cards with 3090 I have to told too much, but 3090 if you will add now, then it will go for it, it will work really nice, okay। So by seeing the future I have added this, okay। now next is the Seagate backup plus slim 2 TB external HDD, okay, means it's a hard drive of, okay। I have taken 2 TB because I know that you are building this PC for gaming only, and I think that you are not going to delete every game after downloading it. It hurts your feelings, okay? So you can store it. It will give you a lot of space. Okay. Now here we have Seagate Barracuda SSD of 240 GB. I think so it is worth it because I am using 500 GB, but it is worth it for you, and I think so it will go for you.
ओके द SATA SSD इट ओके जो कॉपी स्पीड देगा आपको 6 Gbps का, ये बोल तो रहा है, बट आई डोंट थिंक इट विल गिव 240 GB। आपको बस इसमें विंडोज लोड करना है, बाकी आप इसमें कुछ लोड मत करना। अगर आपको अगर करना है, ठीक है, देन यू हैव टू गो विद द 500 GB मॉड्यूल। it will come for rupees 5 to 6,000 rupees. I don't think that you should pay that much money for storing games in it. You should not store. If you will store games ना, then the booting time of the games will be smaller, means small time में ही आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। नॉट अ बिग डील। आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने इसे प्रेफर किया बिकॉज राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस कंपनीज ओनली। you can use it, you can go for it। okay, it's Amazon choice with is guarantee it will not come खराब, मतलब it will not ruin your feelings, RUIN वाला ruin, ठीक है। now I should add in the accessories, sorry for it। okay, now we are taking to the accessories one। okay, if you wanna purchase our company means our tube gaming membership वाला, आपको वो चाहिए होगा कोई भी accessories means आपको टी शर्ट है। पहले हम लोग थोड़ा स्पॉन्सर कर लेते हैं, ओके, अपने चैनल को। ओके, अगर आपको कभी भी ट्यूब गेमिंग रिलेटेड नहीं तो अगर आपको अपने फेस को प्रिंट करवा के कोई भी चीज़ चाहिए, मतलब इस माउस पैड में भी अगर आपको अपना फेस प्रिंट करवाना है, या एनी काइंड ऑफ लोगोज एंड एनी काइंड ऑफ साइंस यू हैव टू प्रिंट, just contact me। The every details will be in the description box below। you have to pay, I will deliver you to your address। it will all over India delivery is available, but some charges are cut। सो मेरे पास जो रहेंगे ना, वो मेरे पास एक्सेल नहीं रहेगा, इतना बड़ा नहीं रहेगा, मेरे पास स्मॉल रहेगा, जो आपके लिए वर्क करेगा भाई। ये एक्सेल है, 579 रुपीज वर्थ इट फॉर इट। इट गोज, बट आई डोंट थिंक द क्वालिटी विल बी दैट मच गुड दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ। मेरे पास जो है ना, मैं अपने कंपनी का खुद यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मेरा ट्यूब गेमिंग इसमें लिखा हुआ है। मैं आपको एक फोटो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे से कांटेक्ट करके मैं इसका फोटो आपको भेज दूंगा, आप इसको परचेस कर सकते हो, ठीक है। और अगर गेमिंग टी शर्ट्स, मतलब आपको अपने टी शर्ट में आपका फेस प्रिंट करवा के आपको गेमिंग करना है, दैट्स ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल विद आई कैन गेट अवेलेबल फॉर यू। ओके, okay, 579 rupees for a Excel mouse pad, it's okay, you can pay for it। now we are going to add a UPS। you have to get a good UPS, I think so this one will go for you। APC company UPS, it will work for you। 2001 hashtag one bestseller, means the ratings of this UPS is totally nice because I am using it। okay, I have not purchased it online, but I have gone with it। I have built my PC offline, that's why I will prefer you this one only। okay, this is nice, this is really nice, I think। okay, how many? okay, 3 slots you are getting, that's really too low, wait a second, I have to count। no, it will work because you are needing only two, for one for a PC and one for your gaming monitor, it will work। okay, that's nice। okay, we are adding this one too। okay, now I think so, HDMI port, HDMI port, so I think so the HDMI port will be coming in there, but I don't think you will purchase it। okay, now our PC build is complete, let's calculate the budget। okay, we have to calculate the budget now। I think so it is gross 80,000, I think so, but not a big deal, it will, no, I will try not to cross the budget। okay, the price of the UPS is 3,296, we can hold it 3,300, 3300 plus। now what is next? The mouse pad of 579 is 580 rupees। then the Seagate Barracuda internal solid drive, okay, this one I think one I've skipped। okay, this one is the SSD price is 2,500। okay, 2,500 for the SSD, not a big deal, it's a great deal। okay, now the 2 TB HDD, okay, it's for 5,500, it's 11,000। okay, now the power supply is of 5,300। I'm adding too much because I have added, I think so, 10-20 rupees extra right over now।
Okay, now I think so that this is a RAM stick. I have not calculated this. I have to tell. This is DDR4 8 GB RAM stick. Okay, ये एक आपको 2,980 रुपये में मिल जाता है. तो I think so you will take two because the gaming experience with 16 GB DDR4 RAM stick, it will be OP. So we are adding two. If you don't have a budget of two, then you can go for one. But I am adding two right now. 2,900 means 2,980. I will add on 180 plus 2,980. Okay, 23,140 right now. Now you have an option right over here. You can add the RGB one or this one also. I will go for it only because I don't think you should waste 2,000 rupees for RGB one. Not a big deal. You can add. You can have some money from your father or your mother. They will give you for 2,000 extra. They will pay for it. Not a big deal. 6,915. 6,915. Okay, it's 30,055 rupees. Now the CPU. Okay, the 14,880. That's big deal. Okay, I don't think you should need it. I will cancel it. Don't add it. Now the graphics card means the 12,999 rupees. Wait a second. I have okay, now 57,934. Okay, now the cabinet can be of your choice, but मैं प्रेफर करूंगा इससे बिकॉज थोड़ा क्वालिटी भी होना चाहिए भाई. इतना महंगा चीज़ अगर कभी गिर गया तो भाई थोड़ा लगेगा दिल में. इसीलिए थोड़ा बेस्ट क्वालिटी रहना. आप थोड़ा और एक्सपेंसिव ले सकते हो इसे 5,000 तक. इट विल बी वर्थ इट फॉर यू. लेट्स ऐड इट मनी. ओके, 3,900 rupees. 3,000. Let's say 899. Not a big deal. Okay, now the monitor. Monitor is a beast. You should go for it. 24-inch is worth it. 24-inch for 144 hertz. It's nice. Really nice. You can go for it. That's nice. 74,000 we have. I think don't say. Then we should cross the budget. Please don't cross the budget. Okay. 20, 50. Oh my gosh, we have built it in a budget of 78,181. You can go for it. So guys, this was our video. The whole budget was of 78,181 rupees. It's really nice. I will give the link of every single freaking pieces in the description box below. You can go and directly purchase for it from it. It will be not a pay nothing. Just go and grab it, man. Why the hell you are waiting for? ओके, यहाँ पे आपको दो तीन ऑप्शन और मिल जा रहा है. यहाँ पे ग्रीन कलर का आपको मिल रहा है, फिर यहाँ पे ये मिल रहा है. मेरे हिसाब से ना यही इसी के साथ जाओ. ठीक है भाई. गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. अगर आपको इसी तरह के पीसी बिल्डिंग रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो भाई हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करो. बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में. ऑल द लिंक्स विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो.